of you on my YouTube channel once again. This video is going to be very much important for the candidate who appeared in NDA 1 2021 examination. Now the result of NDA 1 2021 has been declared by UPSC. अभी एक खुशखबरी आई है UPSC के तरफ से that NDA 1 2021 result has been declared. And around 7,000 plus candidate has made to this UPSC NDA 1 2021 written examination, and they will be called for SSB at various boards across the country. So in this video I am going to tell you step by step process how you can see your NDA written exam result. So stay tuned in this video till the end, and I have also got few surprises for you. मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ. सरप्राइज मैं आपको अभी वीडियो में बताने जा रहा हूँ. इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना पड़ेगा. इफ़ यू ओपन द क्रोम ब्राउज़र यू हैव टू टाइप www.upsc.gov.in. So the UPSC official website has opened. This is the official website of UPSC. Now you have to go on to the what's new section. What's new section is this one. Please click on this view all button. This view all you have to click. Now I have clicked this view all button. आपको इस view all के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा. अगर आप व्यू ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन आ रहा है दैट इज द रिटन रिजल्ट ऑफ एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन 1 2021. क्लिक ऑन द सेम रिजल्ट and now you will get the result in form of PDF. Now if you click on the PDF it will get downloaded. आप अगर इस PDF पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा. अब देखिए यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे. Now it has got completely downloaded. अब देखिए ये ऑफिशियल है यूपीएससी के तरफ से. फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर्ड. सो यू हैव टू कंप्लीटली बिलीव ऑन दिस. And I'll also show you various important thing regarding this result. Thing is that if you scroll up you will see various result, like the entire result PDF is in 20 pages. So many candidate has passed. Already I told you that around 7,000 plus candidate has made to this NDA examination. Now they will be called for SSB interview so that finally they can join National Defense Academy. अब मैं आपको सरप्राइज बताने जा रहा हूँ. सरप्राइज यही है कि कुछ कैंडिडेट जो कि एनडीए एग्जाम की तैयारी करते हैं इस चैनल से जुड़े हुए थे और उनमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है. और टोटली इस चैनल पे अभी तक 100 वीडियो बना चुका हूँ. उन 100 वीडियो में से कुछ ऐसे वीडियो हैं जो कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा ही लिया गया है जो कि यूपीएससी पास किए हैं. सो नाउ आई विल शो यू देयर एडमिट कार्ड एंड दे हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी. Now we will come to the admit card of that particular candidate. First candidate is Agam Krishna. His roll number is 15333688. यहाँ पे मैं उनका फेस, उनका फादर नेम, मदर नेम और आधार नंबर प्राइवेसी के लिए हाइड कर चुका हूँ. बट दिस इज द ऑफिशियल एडमिट कार्ड ऑफ यूपीएससी एज यू कैन सी. सो देर इज नो रॉन्ग. आई एम नॉट चीटिंग यू. दिस इज द ऑफिशियल एडमिट कार्ड ऑफ द particular candidate from UPSC and his roll number is 15333688. 15333688. Now I'll show you his name in the written result. 15333688. 15333688. As you can see that this candidate has cleared the NDA 1 written examination. Now he will be called for SSB interview. 15333688. He is Agam Krishna. Now he will be called for NDA interview and he has taken so many classes in this channel. So if you are new to the channel you can subscribe so that your chances of selection also will become very high. Next candidate who has made from this channel is, I'll show you his admit card. Next candidate is Manish Kumar. Again I have hidden his photo, his father name, mother name and Aadhaar number. His roll number is 1502184. 1502184. Open up the admit card. 1502184.
So see, this candidate has also made to the NDA 1 written examination result 15121884. He is cadet Manish Kumar. He has also made to the NDA 1 2021. He was also the part of channel. ये जो कैंडिडेट है ये भी इस चैनल से जुड़े हुए थे और इनका सिलेक्शन हो गया है. तो अगर आप भी अपना नाम इस लिस्ट में लाना चाहते हैं इन दी नेक्स्ट अटेम्प्ट, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. सो ही इज करेक्ट कैंडिडेट मनीष कुमार हु हैज क्लियर्ड दिस NDA 1 2021. नेक्स्ट कैंडिडेट आई शो यू. नेक्स्ट कैंडिडेट इज सौरभ कुमार. Next candidate is Saurav Kumar, and this is again the official admit card of UPSC. Again I have hidden his photos, then ID card, ID number, father name and mother name. His name is Saurav Kumar. He has again passed this NDA 1 2021 written examination. His roll number is 15018711. 15018711. Now I'll show you his result. 15018711. 15018711. 15018711. See, he is the candidate who has made to the NDA 1 2021 written examination. Now he will also be called for his SSB interview, and if he gets recommended, he will finally make into the National Defense Academy, which is one of the prestigious institute in our country, only tries service in our country. So he is candidate Saurav Kumar who has made to the NDA 1 2021, and this candidate has also taken few classes in this channel. If you haven't watched them, you can watch the entire classes. He has taken the classes of mathematics trick to solve in a span of 2 to 3 सेकेंड. ये कैंडिडेट सौरभ कुमार है जो कि मैथमेटिक्स की क्लास इस चैनल पे ले चुके हैं, जो कि लगभग 2 से 3 सेकेंड में आंसर आप उस मैथ से के ट्रिक से आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट कैंडिडेट मैं आपको दिखाऊंगा हु हैज़ मेड फ्रॉम दिस चैनल इज दैट. नेक्स्ट इज दिस इज अगेन दी UPSC ऑफिशियल एडमिट कार्ड. नेक्स्ट इज लक्ष्मण कुमार. Lakshman Kumar is the next. Again I have hidden his photo, father name, mother name and Aadhaar number. He is Lakshman Kumar and his roll number is 151135. 151135. 151135. Again I'll show you in that same result format. 151135. See, he is the candidate who has made to the NDA 1 2021 written examination, and he was also the part of the channel, and even now he is part of the channel. And now out of the 100 videos, most of the videos are uploaded by these 4 candidates only. So they have already analyzed the previous 10-year question paper during their exam preparation only. ये पहले से ही पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए थे अपने एग्जाम के टाइम में, और वो कई सारे डिफेंस कैंडिडेट जिनका सपना है कि वो NDA में जाएं और NDA एग्जाम की तैयारी करें, तो वो इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल एक्स कैंडिडेट के द्वारा बनाया गया है जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली NDA एग्जाम निकाल चुके हैं. तो इफ़ यू ऑल्सो वांट योर नेम टू बी इन द लिस्ट, प्लीज स्टे ट्यून इन दिस channel. So finally I would congratulate all of you whoever has passed in the written examination. All the best for your SSB. अभी से आप अपना SSB पे फोकस करना स्टार्ट कर दें, और अगर आप NDA 2 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक फ्री क्रैश कोर्स इसी चैनल पे लाया हूं. आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मैं पाथफाइंडर की सीरीज को कंप्लीट करने वाला हूं. ये पाथफाइंडर ऐसा बुक है जो कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट के द्वारा प्रीफर किया जाता है. तो पाथफाइंडर सीरीज को कंप्लीट करने वाला हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैथ के कुछ टॉपिक कवर कर चुका हूं, और टिल 14 नवंबर, टिल अगले एग्जाम तक ये टॉपिक मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा. और ये सेशन ये 4 कैंडिडेट के द्वारा लिया जाएगा, जिसका नाम मैंने आपको अभी दिखाया, जो कि ऑलरेडी NDA 1 2021 क्वालिफाई कर चुके हैं. सो दे विल बी रिपोर्टिंग टू वेरियस SSB बोर्ड्स फॉर देयर SSB. अगर आप SSB की भी तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट स्टेप का, दैट इज़ OIR, देन वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज कॉल्ड OIR. इन दैट वी विल कवर द 10 सेट्स
which have previously in the various SSB board. After the analysis of SSB OIR from the various candidate who has attended the SSB, उनके एक्सपीरियंस से मैं कुछ 10 प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाने जा रहा हूँ OIR का। इसीलिए आप OIR प्रिपरेशन के लिए भी चैनल से जुड़ सकते हैं। और अंत में मैं once again I congratulate each and one of you whoever has made to the SSB. Please stay tuned in this video for अपकमिंग वीडियोस दैट व्हेन विल योर SSB डेट कम। अगला वीडियो मैं यही बनाने जा रहा हूँ कि आपका SSB डेट कब आएगा, आप इसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। जय हिंद।